सदैव खुश रहो. दिस इज JBN डॉक्टर ब्रजराज सिंह चौहान, एसोसिएट प्रोफेसर, ज्योति विद्यापीठ, वुमेन्स यूनिवर्सिटी जयपुर. प्रोग्राम MSc केमिस्ट्री, फर्स्ट सेमेस्टर. कोर्स इज बायोस्टैटिस्टिक्स एंड सेशन ऑफ टुडे इज फ्रीक्वेंसी पॉलीगन. और ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस हिस्टोग्राम फ्रीक्वेंसी पॉलीगन इज टू रिप्रेजेंट द डाटा in frequency distribution graphically using histogram, frequency, polygon and ogive. Data is type of what is percentage of Americans find life dull, what percent of Americans are color blind, how many gallons of soda does the average American drink during the year. These are the problems that is represented in the histogram or frequency polygon graph. Purpose to display data to viewer in pictorial form. Three most common type of graphs: histogram, frequency polygon and cumulative frequency graph. Histogram graph that display the data by using contiguous vertical bars of various height of represent the frequency of the class. To construct a histogram, draw and label the x and y axis, represent the frequency on y axis and the class boundary on the x axis using the frequency as height. Draw vertical bars for each class. Histogram is represent in front of you. The picture is given of the histogram. Then frequency polygon graph that uses lines that connected points plotted for the frequencies at the midpoint of the classes. Frequencies are represented by the height of the point. To construct a frequency polygon, find the midpoint of each class. Draw the x and y axis. Label the x-axis with the midpoint of each class. Then use the suitable scale for the frequencies on the y-axis. Using the midpoint for the x values and the frequencies as the y values the points. Connect adjacent point with line segment. Draw a line back to x-axis at the beginning and end of the graph. कहने का आशा ये है कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के ड्रॉ करने से पहले हमको हिस्टोग्राम को ही ड्रॉ करना है. हिस्टोग्राम ड्रॉ करने के बाद प्रत्येक रेक्टेंगल में मिड पॉइंट को फाइंड करेंगे. दैट वाज द फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ ईच क्लास. देन joining the all midpoints and it makes a frequency polygon likes in front of you. So frequency polygon and next is ogive, cumulative frequency polygon. Ogive graph that represent the cumulative frequencies for the class in a frequency distribution. To construct an ogive, find the cumulative frequency for each class. Draw the x and y axis. Label the x axis with the class boundary. Label the y axis and the appropriate frequency. Don't use actual frequency numbers, yields uneven interval or classes. Plot the cumulative frequency at each upper class boundary. Starting with the first upper class boundary, connect adjacent point with line segment. Extend the graph to the first lower class boundary in the x-axis. Constructing statistical graph, general procedure. Draw and label the x and y axis. Choose the suitable scale for the frequency for cumulative frequency and label it on the y axis. Represent the class boundary for the histogram or ogive or the midpoint for the frequency polygon on the x-axis. Plot the points and draw
दी बार और लाइंस। कहने का आशा ये है कि जो भी हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, उस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की क्लास को हम एक्स एक्सिस के ऊपर और फ्रीक्वेंसी को वाई एक्सिस पर लेंगे। उसके बाद हम इनके हेल्प से इसके रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे। रेक्टेंगल ड्रॉ करने के उपरांत उसके मिड पॉइंट को फाइंड करेंगे प्रत्येक क्लास इंटरवल के, और उन क्लास इंटरवल के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे। ज्वाइन करने से जो हमें ग्राफ प्राप्त होगा उसी को हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कहते हैं। I hope you all are satisfied with this session. If you have any query, please mention in comment box. I will resolve it very soon. Thank you.